हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। और आज मैं जो एक वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो का दो पार्ट है, ठीक है, दो पार्ट होता है। तो पहला जो पार्ट होगा दैट आई विल टॉक दैट हाउ what is this new education policy and how it is important from the perspective of economics, right? So अगर आपको इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 आया है उसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है, ठीक है। एक तो है नॉर्मल एजुकेशन में क्या होगा, एजुकेशन सेक्टर में क्या होगा जो आपको पता होगा कि, ठीक है। और दूसरी बात होता है कि अगर आप इकोनॉमिस्ट हो, मतलब आप एक इकोनॉमिक्स टीचर बनने वाले हो, तो फिर आपको उस एंगल से सोचना है कि उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज में जो है मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट इम्पैक्ट रहेगा, फर्स्ट दैट विल बी ऑन एम्प्लॉयबिलिटी and that will change your labor efficiency. Okay, so the new education policy is emphasizing more on skill development, vocational training, all those things. So if that is actually implemented, then what will happen? It will increase the employability of the labor force, ठीक है, employability of the labor force, and they will engage in more kind of jobs that is demanded in the labor market. And given that the adoption of new technology, the way they are actually doing their work in the past and now the new skill set, that will increase their labor efficiency, which will affect the labor productivity and ultimately that will affect the economic growth, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। दैट इज योर एम्प्लॉयबिलिटी दैट विल लीड टू लेबर एफिशिएंसी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो हुआ वो हुआ दैट इज योर प्रोडक्टिविटी। So labor employability हो गया, labor productivity. How productivity? Because the education that it provides, okay, and that is more towards a global education standard, which will help students and of course those who are in the labor force to collaborate with the international network that will help in new research and development. Okay, and so that will help in the productivity. That means the way you are producing the output using the inputs, that will improve and very efficiently they will be able to produce. So that will be your productivity, okay. So productivity is also very important. So okay, and the third thing that is very important in the new education policies, right, is actually less costly entry in the labor market. What is this? This is the like you have in your education policy, this new education policy, that you will be given a certificate every year, right? Like in our system, what is it? That if you are doing a graduation degree, then you will get only the certificate only after the completion of your degree. That may take 3 years or 4 years, like that. But however, here every year you will get a certificate. So what you could do that, if you want to leave the education and want to join the labor market, you can easily join the labor market. And if you again come back to your college, then you can come back and again rejoin and start and complete the course. Okay, so
this is very less costly. Why? Because initially, suppose for example, if I am in the second year, I got suppose I have some financial constraint and I am not able to pay the fees of my college, so I thought that okay, let me drop and I'll go to the labor market. There I'll earn some money, then again I'll come back and learn. But at that, for our time, it was very difficult to do it, because you know that if you're leaving your college degree before its completion, then you will not be awarded a degree. That means, for example, if you are, even if you have already completed the third year, I mean you are in the mid third year, but still you are not able to, if you are leaving the college, then you will not be given any degree. So your degree, your eligibility will be only based on your plus 2. Okay? So that constraint is not there. That constraint is not there. Therefore, this is also very less costly, and typically cost is less, so you can very easily enter to the labor market and you can take a job that is suitable for you based on your skill set as well as your degree. Okay. So these are the main important things that the new education policy is providing in this kind of in the economic perspective. So whenever in your interview, if they ask you that what is the implication of this new education policy for economic growth, so you could give a very nice, short and crispy answer. The answer is that this new education policy has provided a lot of opportunity to increase the labor productivity, to increase the overall productivity, and it also lower the cost of entry into the labor market. Therefore, this in itself is a very progressive policy that can be implemented to improve overall economic growth of India. Okay? That is a crispy answer you can give. In the case they ask how it is labor efficiency, so you could give that the skill development is a process where that is going to help in improving the labor efficiency. If there is a total productivity, so you could say that it is in the research and development front, right? And if there is how less costly it is entry, then the example that are given, that you can very easily go to the labor market, job, you can work, and whenever you want to come back to the college, you can come back and again complete the course degree. So this is the way how you have actually the thing has been changed. This is the one, because I have seen that in many videos people are telling that what will be new education policy, which you already know, because while you are preparing for the exam you must have read it. But my objective in this video was to tell you from the perspective of economics. Okay? So that was the main thing that I wanted to say. Okay? So now I will talk about the introduction. In the introduction of the topic, right? So whenever you are introducing any topic, introduction of the topic. So in the introduction of the topic, you remember that it, as I had told in my last video, it depends upon the context. Okay? Suppose for example, if I am telling you something in micro, I have to see that what. Suppose for example, if you are teaching a student like what is say for example, if you are teaching what is called equilibrium, right? Equilibrium in the market, then you should tell that what is supply curve, what is supply demand that we have learned. Now we will go to the market where both interact and you get the equilibrium price. So that is one way. And suppose you are teaching Indian economy, the poverty, right? Suppose you are teaching about the Indian economy and poverty. So then what you can do, actually you can take certain pictures of India where you can see that how people are staying in a very below poverty line, and you may students make it interesting that how this should be encouraged to. What happened? Why it is so, why people are so poor, and how government had done something to improve the status of these people and the living status of these people. So you start your introduction like that, right?
And suppose if they are telling, suppose you are starting a topic on like interest rate, okay, interest rate, then you start something like कि आपने कभी नाम सुने हो इंटरेस्ट रेट, कि अगर आप किसी से उधार लेते हो तो आप इंटरेस्ट रेट कितना देते हो, क्या आप कभी मम्मी पापा से कभी सुने हो इंटरेस्ट रेट होता क्या है, और ये सब बारे में आप ट्राई कर सकते हो कि ताकि बच्चे लोग खुद को पता चले कि हाँ ये क्या होता है, ठीक है. सो इट इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. इट्स नॉट अबाउट लाइक हाउ मच what there is no any fixed method of introduction. You can use teaching aid, you can use a story to introduce a topic, or you can use real life examples, and you can also do some activities to introduce the topic, and so it's so many, right? And so I know that it depends, like I mean, for example, if you're something like, suppose you are going to teach rural development, ठीक है, suppose you want to do rural development. So in the rural development you could start like this, कि this is city and this is the village, how the village structure looks like, how cities look like, what is the problem they are facing. You ask your student कि this is village life, this is a city life, what problems do you think that this might I mean these people in the living in the village are facing. So they might say that they might have water problem, they might have this problem, they might have banking problem, they might have, they don't have Swiggy, they might don't have Amazon, like that you can tell, right? And then they don't have banking. Then you say that okay, again if you want to develop it, right, like Mahatma Gandhi ji told that that India sits in its lives in its villages. So आप इसका कोर्स भी यूज कर सकते हो उसको एम्फसाइज करने के लिए, ताकि बच्चों में जो है ना, बिकॉज सी मुझे जितना इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब आपके कोई स्टूडेंट हो जो इस टॉपिक को पढ़े, आप उसको ना सोसाइटी का पिक्चर दिखाइए, आप उसको सोसाइटी का पिक्चर दिखाइए कि सोसाइटी होता क्या है, ठीक है. तो उसको वो देख के ना उसके मन में आएगा कि हाँ यार ऐसा होता है, ठीक है. कि तो फिर जैसे कि बंगाल में फैमिन हुआ था, वो वाला भी पिक्चर दिखा सकते हैं कि हेल्थ का क्या इशू है, कोरोना में टाइम में कैसा हुआ था प्रॉब्लम. तो आपको एक इकोनॉमिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है ना जहाँ पे आप हर चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है. और ये एक अच्छी चीज़ है जो मैंने आपको बताया, तो उसी हिसाब से मतलब आप देख सकते हो. तो अगर आपको किसी ने बोला कि आप कि सपोज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में आप बताना चाहते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप बच्चों को कोई क्या देख सकते हो, आप बता सकते हो आपकी जो पेन है वो कहाँ पे बनाया हुआ है, आपकी जो मोबाइल है वो कहाँ से बनाया हुआ है, ठीक है. तो फिर इससे क्या होता है ना, बच्चों को पता अच्छा ये बनाया हुआ है, तो हाँ इसका मतलब हमने ये बनाया गया है उस कंट्री में, हमने इसको यूज़ करें, उसको हम इम्पोर्ट करते हैं. तो इस तरह का मतलब जो होता है ना कि जो चीज़ें वो आता है लाइफ मतलब, तो इस तरह का आपको इंट्रोड्यूस करना है. अगर मैं टॉपिक वाइज इंट्रोड्यूस करूँगा कि देखो एक्चुअली मैं एक सिचुएशन बताता हूँ कि अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो टॉपिक, इट डिपेंड्स ऑन द क्लासरूम. बिकॉज देखिए आप जब इंटरव्यू के सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, आप जो भी बोलोगे उनको फनी लगेगा, आपको भी थोड़ा सा awkward लग सकता है कि मैं इसको कैसे बताऊँ. लेकिन क्या होता है एक्चुअली जब सामने स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो आपका इनोवेशन वहाँ आता है. तो आपको उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आप ये बताएंगे स्टूडेंट्स को कि ऐसा ऐसा है, ठीक है. तो ये इस तरह से आप क्लास को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. और बहुत कुछ लोगों ने मुझे कमेंट दिया कि नहीं आपको प्रीवियस नॉलेज, नो इट्स नॉट अबाउट प्रीवियस नॉलेज ऑलवेज. क्योंकि आप बताइए ना, जो लड़का अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव मार्केट को कहाँ पता है कि वो 10th में क्या उसको पता होगा कि कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है. इट इज कम्प्लीटली न्यू फॉर दैट पर्सन. तो आप वहाँ से प्रीवियस नॉलेज का यूज नहीं कर सकते. वहाँ आपको क्या करेंगे, एक ऐसा सिचुएशन लाइए जिससे कि वो समझ सकते कि कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, आप लोग क्या कम्पीट करते हो, आप मार्क्स के लिए कम्पीट करते हो, तो फिर मार्केट में किस चीज़ के लिए कम्पीट करते हैं, ठीक है. ये वाला जो चीज़ है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है. तो ये बात आराम से आप थोड़ा सा देखिएगा. बस आज मुझे यही 2 पॉइंट बोलना था कि लाइक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था और इंट्रोडक्शन देने का क्या क्या था, वो वाला मैंने आपको बताया. और मैं डेमो क्लासेस तो दूंगा ऑब्वियसली, एक एक टॉपिक करके दूंगा. मैं आपका भी माहौल है अभी इसलिए मैं दे रहा हूँ एक एक करके, मतलब कोई टिप्स अगर चाहिए तो आपकी कमेंट्स पढ़ के ही मैंने आपको जो सजेशन दे रहा हूँ.
मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस हिसाब से एक एक डेमो क्लासेस देते हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की मत भूलिएगा। और अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो रिकमेंड भी कीजिएगा। और मुझे अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर देखता हूँ या कोई व्यूअर्स देखता हूँ, आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ पर्टिकुलरली, मुझे अच्छा लगता है कि मतलब आप, ऐसा लगता है कि आप मेरे एक स्टूडेंट फैमिली हो, मुझे अच्छा लगता है। या आई कैन से दैट आप मेरे स्टूडेंट हो, आप कह सकते हो कि आप मेरे कॉलीग हो, क्योंकि आप अभी जॉब करने वाले हो, ठीक है। तो बने रहिए ऐसे ही साथ में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।